Assalamu alaikum to class. This is your maths lecture. So open your books, page number 37. Addition of several numbers, converting ones, complete these sums. In this page, we will do addition of several numbers. So question number 1. Here are given three sums. First number is 14. Next plus 309 and next number is 108. Students, you are seeing this is 2-digit number 14 and this is 3-digit number 309. 108 is also 3-digit number. Students, in addition question हम ये देखते हैं, हम सीक्वेंस को नहीं देखते. मीन्स 2-digit नंबर को हम कहीं भी लिख सकते हैं. यहाँ सेंटर में भी आ सकता था, एंड में भी आ सकता था, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती. लेकिन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में हम सीक्वेंस को देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यही क्वेश्चन हमारे पास सब्ट्रैक्शन का होता तो हम 14 को ऊपर नहीं लिख सकते थे. लेकिन एडिशन के क्वेश्चन में हमें इस रूल को फॉलो नहीं करना होता. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we will add ones column. This one 4 plus 9 and then we will add 8. सबसे पहले हम 2 digits numbers को add करेंगे 4 plus 9. So let's count how many we will get by adding 4 and 9. 4. You can add on your fingers as well. 4 plus 9. In 4s we will add 9s more. So 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So by adding 9 in 4 we will get 13. So 13. Next we will add 8 more in 13. So let's count. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So now we will get 21. This is 2-digit number. It is greater than 9. Then when answer we will get is greater than 9, we will do changing. 1 is written here and 2 becomes carry. This 2 goes to tens column and this is called carry. So what is carry? वो number जो हम next move करते हैं, that is called carry. So what is carry in this question? 2. Yes, 2 is carry in this question. So 1 is written here and 2 becomes carry. And students, ये आपने याद रखना है कि carry को हम must add करते हैं. So this is 2. Now we will add ones in 2. 2 plus 1, 3. 3 में 0 plus करें, it remains 3. Next 3 में 0 add करें, it also remains 3. So the answer is 3. Next we will add 100. There is nothing and there is no any number. So next one is 3. 3 plus 4. 3 plus 4 is 3. 3 plus 1 is 4. So the answer is 431. This is question number 1. Next question number 2. 7 plus 9 plus 9. First of all, we will add 9 more in 7. So let's count. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. By adding 9 in 7, we will get 16. Now we will add 9 more in 16. So let's count next 9. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25. So we will get 25. 2-digit number 5 is written here and 2 becomes carry. Next we will start adding from carry. 2 plus 2, 4. Next add 4. 5, 6, 7, 8. 8 plus 0. It remains 8. Next, hundreds. 4 plus 2, 4. 5, 6.
So this becomes 685. This is our answer. So students, you will do all these questions using same method by yourself. Next, open page number 38. On page number 38, one question is given and another new concept is given. So let's understand this. First of all, we do solve this question. This is 1, 9 plus 1. We will add 1 in 9s and we will get 10s. The answer is 10. 0 is written here and 1 becomes carry. Now 1 plus 9 is equal to 10. Same method we will do. 0 written here and 1 becomes carry. Now 1 plus 9, the answer is 10. Now what we will do? We will use same method. 0 is written here and 1 becomes carry. Now there is no number beneath the 1, so 1 comes down. So what is this one? What is the value of this one? The value of this one is 1000. So our answer is 1000. First of all, number is ones, next tens, next hundreds, and next to 100 is 1000. So 1000 in 1000 4 digits are present. 1, 2, 3, 4. When 4 digits are present, it means our answer is in thousands. Concept of 1000 is on page number 38. Next, open page number 39. Each child's score is the total of the numbers given by the 2 sheets they hold. Students, there are 3 students. First one is Amir, second one is Alia, and third one is Majid. Amir obtained 24 marks in one subject and 23 marks in other subject. Alia get 45 marks in one subject and 25 marks in another subject. Majid get 50 marks in one subject and 23 marks in another subject. By adding their numbers 24 and 23, Amir got total 47 marks, and 45 and 25, when we will add 45 and 25 marks, so total marks of Alia is 70. Majid got 50 plus 23 is equal to 73. So total marks of Majid is 73. Amir got 47 total, Alia got 70 in total, and Majid got 73 marks in total. So there are given some questions about them. So let's start. Which child has the lowest score? Student देखें सबसे कम स्कोर किस स्टूडेंट के हैं? Yes, Amir has the lowest score. So we will write here Amir. Which child has the highest score? सबसे ज़्यादा स्कोर किसके हैं? Majid has the highest score because he has 73 in total. Whose score is nearest to Majid's? मीन के मजीद के स्कोर 73 हैं. इसके करीब तरीन किसके स्कोर हैं? 47 इसके करीब है या 70 इसके करीब है? यस, 73 के क्लोज है. सो आलिया हैज़ स्कोर नियरेस्ट टू मजीद. व्हाट इज़ आलिया स्कोर? आलिया के टोटल स्कोर कितने हैं? 70. आमिर इज़ शॉर्ट ऑफ 50 मार्क्स बाय. आमिर के 47 मार्क्स हैं और कितने नंबर ये और लेगा कि इसके 50 हो जाएंगे? 50 से कितने कम हैं? सो when we will add 3 more in 47, we will get 50. So Amir is short by 3 marks of 50. What is the total score obtained by Amir, Alia and Majid? आमिर, आलिया और मजीद के स्कोर्स का टोटल क्या है? When we will add their score 47 plus 70 and plus 73, we will add and we will get 90. So their total score is 90.
Next question. I have 37 marbles and Seema has 26 marbles. मेरे पास 37 marbles हैं और सीमा के पास 26 marbles हैं. How many marbles have I than Seema? मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि किसके पास ज़्यादा मार्बल्स हैं, मेरे पास ज़्यादा मार्बल्स हैं या सीमा के पास, क्योंकि सीमा के पास 26 मार्बल्स हैं जबकि मेरे पास 37 मार्बल्स हैं. तो किसके पास ज़्यादा मार्बल्स हैं? यस, आई हैव more marbles than Seema. So question number 1 is how many more marbles have I than Seema? मेरे पास सीमा से कितने ज़्यादा मार्बल्स हैं. सो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डन सब्ट्रैक्शन concept in one class, so we will do here. I have 37 marbles and Seema has 26 marbles. How many marbles I have more than Seema? 7 minus 6. 7 में से 6 को माइनस करें, we will get 1. And 3 minus 2. 3 में से 2 को कट करें, माइनस करें, then we will get 1. So the answer is 11. It means I have 11 more marbles than Seema. How many do we have altogether? Altogether, it's mean we will do addition. In previous words problem, you have learned that in each word problem, one word is given at the end. That word is altogether. It's mean when altogether comes at the end of the question, we will do addition. So यह बात आपने याद रखनी है कि जब भी किसी वर्ड प्रॉब्लम के एंड में ये वर्ड आ जाता है तो हम उधर एडिशन करते हैं. सो वी विल डू एडिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड वंस 7 plus 6. वी विल ऐड 6 more in 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. We will get 13. 3 right here and 1 becomes carry. So 1 plus 3, 4. Next 5, 6. So their sum is 6. So दोनों के मार्बल्स कितने हुए? 63. How many more do we need to make 100? 100 बनाने के लिए हमें और कितने मार्बल्स की ज़रूरत होगी? सो इसके लिए भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. हमें कितने मार्बल्स बनाने हैं? 100. वी विल राइट हेयर 100. और हमारे पास टोटल मार्बल्स मौजूद कितने हैं? 63. We will do here subtraction. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि हमने 3 डिजिट नंबर ऊपर लिखा है और 2 डिजिट नंबर नीचे लिखा है, जबकि हम एडिशन में क्या करते हैं कि हम नंबर्स की डिजिट्स को नहीं देखते, हम जहाँ चाहे उसको लिख सकते हैं. लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमें ये रूल फॉलो करना पड़ता है. वी विल राइट बिगर नंबर on upper and lower number down. So ones, tens, hundreds. 0 minus 3. It's smaller than 3, so we will take borrow. We have done this concept in one class and in next chapter we will do it. We will practice more it. So we will take borrow from tens. Here is also 0. So 10 takes borrow from 100. So this one comes here and here left 0. Now 10 has tens. अब 10 के पास 0 नहीं है, अब इसके पास 10 बन चुके हैं, अब ये इसको borrow दे सकता है. So this becomes tens and here left 9. क्यों? इसने अपना 1 इसको दे दिया, so इधर रह गए 9. 10 minus 3. 10 में से 3 को कट करें. Now we will get 7. And here 9 minus 3. 9 में से 6 को कट करें. We will get 3. Here is 0. So 0 comes down. So our answer is 37. So we will need 37 more marbles to make 100. Next question number 3. 12 goldfish were taken from a fish tank to be sold at the shop.
हमने एक टैंक से 12 फ़िश निकाली हैं, गोल्ड फ़िश निकाली हैं बेचने के लिए. दिस लेफ्ट 14 फ़िश इन द टैंक. हमने 12 फिशेस निकाल ली हैं और उस निकालने के बाद उस टैंक में 14 फ़िश मौजूद हैं. हाउ मैनी फ़िश वर देयर टू स्टार्ट विद. तो उधर निकालने से पहले उधर कितनी फ़िश थी टैंक में. इट्स मीन टैंक हैज़ 14, अब उसमें मौजूद हैं 14 और हमने निकाली कितनी है 12. तो टोटल कितनी हुई. वी विल ऐड 12 एंड 14. सो 2 + 4 6, 1 + 1 2. So the answer is 26. So total fish in the tank at the start is 26. So students, practice this page carefully. Now open page number 40. This is the last page of your addition concept. So this is the simple way that we have done in previous all lectures. So you will do this page by yourself. Thank you.